AWS Cloud Infra. Initially मैंने आपको बताया था, when we use this terminology cloud, एक generic understanding मैंने आपको बताई थी, that cloud consists of pool of hardware and software resources. It consists of hardware software resources. यानी तो प्रोवाइडर के बड़े बड़े डाटा सेंटर्स हैं, राइट, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है थ्रू फास्ट हाई बैंडविड्थ low latency fiber optic links, right? Under the sea cables are there interconnecting all these distant geographically far apart locations, right? US, UK, Australia, Singapore, ये सब आपस में interconnected है. That makes the cloud. And the service provider is using virtualization technology, right? Virtualization, it allows to share these resources now. These hardware software resources which are being maintained in these data centers, they are being shared through this virtualization. That's the business basically. And now we all people are going to be the clients, consumers. Yes. So as a client, as a consumer, you simply need to get connected to this cloud somehow. Most of the time we are doing it all via internet, right? And on shared basis, we are going to create our own IT infra, right? So this IT infra is all going to be virtualized. And in this IT infra, you're going to have your own resources deployed, right? Suppose shared basis पर ही है. So your resources, whether they are virtual servers, they are database servers, they are networks, right? Anything related to security, router, anything, blah, blah, you talk about in IT, everything is going to be deployed virtually using the infrastructure of service provider, right? And we as a client, we can establish connectivity anytime, from anywhere, right? Using any gadget, start using these resources as a service only. And we are going to pay only for services to the cloud service provider, right? This I told you, this I repeated, right? Just in 2 words, हम बोल सकते हैं कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये अपने आप में एक रेंटल मॉडल है wherein IT services are being offered to you on rent, right? And this concept is not very new concept which I'm telling you. बस नया इतना ही है कि आईटी की दुनिया में ये कॉन्सेप्ट आया है. अदरवाइज वी हैव बीन यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट wherein you are not the owner, you are not the investor, you are only the subscriber, you are only the consumer, right? You are willing the services only and you are ready to pay for the services, right? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिए थे, we have got law services, we have got tiffin services, we have got room services, we have got transportation services, right? दुनिया भर में ना जाने कितनी इस तरह से सर्विसेज हैं, right, which we don't own, we are paying for it only for the services. So नया कॉन्सेप्ट केवल इतना है कि आईटी की दुनिया में services are now being offered, IT services on rental basis. This is the only thing new, right? कॉन्सेप्ट पुराना है, आईटी की दुनिया अपने आप में जो रेंटल मॉडल है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, राइट? ओके, अब बात चल रही है अमेजोन क्लाउड की, राइट? अब अमेजोन ने इस क्लाउड को स्टैब्लिश करने के लिए क्या किया है, राइट? जब मैंने बोला कि वी हैव गॉट सो मेनी नंबर, मोर देन 100 डाटा सेंटर्स आर देयर, अगर अमेजोन क्लाउड की बात करें. नाउ टू एस्टैब्लिश दीज डाटा सेंटर्स, सर्विस प्रोवाइडर, it has identified certain geographical areas all across the globe. उसने कुछ geographical areas जो है आइडेंटिफाई किए हैं जिन्हें वो बोलता है regions. So cloud consists of regions, और region क्या है? Region is a geography. For example, North Virginia in US is one geography, right? Similarly, Ohio, California. In India, we have got Mumbai as one region. Hyderabad अभी आया है, Mumbai and right? Hyderabad. Yes.
सो मुंबई इज वन रीजन, मुंबई 2016 के आसपास आया है, राइट। हैदराबाद अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही जो है डिप्लॉय हुआ है, राइट। सो लाइक दिस अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में लगभग 31 रीजन है। इट मे बी मोर ऑल्सो बिकॉज दे आर ऑलवेज इंक्रीजिंग इन नंबर, राइट। हर साल दो चार रीजन जो है ऐड होते जा रहे हैं, राइट। 2018 के आसपास कुछ इसके 16-17 रीजन थे, आज की डेट में ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं ये, एंड दे आर स्टिल इंक्रीजिंग इन नंबर। सो क्लाउड इज एक्सपेंडिंग दैट वे, राइट। सो रीजन्स आर ज्योग्राफी। सो प्रोवाइडर ने कुछ रीजन्स या ज्योग्राफिकल एरियाज आइडेंटिफाई किए, राइट। उसकी अपनी कैलकुलेशन है कि किस आधार पर जो है रीजन स्टैब्लिश करना है, एंड दीज रीजन्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट दे कॉल एज अवेलेबिलिटी जोन्स, availability zones, right. And truly speaking, these availability zones are the data centers, right? As of now, in these 31 regions, approximately, or I believe somewhere more than 100 data centers are there, or 100 availability zones are there, right? Now, as per the policy of Amazon का कहना है कि in every region, minimum 2 zones should be there, minimum 2 availability zones should be there or more, कम नहीं, नॉट लेस, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा जोन्स होने चाहिए, राइट। दिस इज जस्ट टू एंश्योर हाई अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस एंड डिजास्टर रिकवरी, राइट। हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी, this is in fact the feature of the cloud, right. Somebody is going for the cloud for these specific regions that resources are going to be highly available. Now what does it mean? मान लीजिए, तो मैं आपको बता रहा था रीजन में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा जोन्स होनी चाहिए, ये उसका पॉलिसी है। यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा दैट यू हैव ए रीजन और वहाँ एक ही जोन, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, राइट। इस वक्त नॉर्थ वर्जीनिया की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट रीजन इन अमेजन क्लाउड विच स्टार्टेड वे बैक इन द ईयर 2006। यहाँ पर 6 जोन्स हैं इस वक्त, and is the largest region in itself, right. मुंबई में अभी 3 जोन्स हैं, इनिशियली 2 जोन्स के साथ शुरुआत की गई थी, हैदराबाद में आई बिलीव 2 ही जोन्स होंगे, आई बिलीव दैट। सो सो लाइक दिस हर जोन में कम से कम सॉरी हर रीजन में कम से कम 2 जोन्स होंगी ही होंगी। अगर हम मुंबई की लेके बात करें तो देखिए, मान लीजिए ये आपका मुंबई रीजन है, राइट। और आज की डेट में यहाँ पर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। सो दिस इज वन जोन, सपोज, राइट। सिमिलरली दिस इज अनदर जोन एंड दिस इज द थर्ड जोन। हर जोन का एक नाम है, एक आइडेंटिफिकेशन वैल्यू है। मैं यहाँ पे अभी सिंपलिसिटी के लिए लिख देता हूँ जोन 1, जोन 2, जबकि नाम एक्चुअली उनके अलग है। एपी साउथ 1A 1B ऐसा उन्होंने नाम दिया है, लेकिन समझाने के हिसाब से जोन 1, जोन 2, जोन 3 ऐसा मैंने लिख दिया, राइट। और ये है आपका मुंबई रीजन, राइट। ये जितने भी जोन्स हैं दे आर हार्डली एट अ डिस्टेंस ऑफ 60-70 किलोमीटर्स, राइट। 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस है इनमें, राइट। और कुछ समय पहले मतलब कुछ साल पहले जो मैंने इसका डायग्राम देखा था मैप के अंदर, उन्होंने विड्रॉ कर दिया आजकल अमेजोन ने, लेकिन पहले एक बहुत अच्छा ग्लोब मैप उन्होंने निकाला हुआ था, उसमें इनकी लोकेशन वो शो कर रहा था। तो 2 जो जोन्स हैं मुंबई में, दे आर समवेयर नियर टू द सी शोर एंड वन ऑफ द जोन वाज समवेयर इन द मिड ऑफ सिटी। फॉर सिक्योरिटी रीजंस दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग देयर एड्रेसेस, राइट। किसी भी डाटा सेंटर को एड्रेस कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन में देखने को तो नहीं मिलेगा, वैसे भले ही पता चल जाए। सो और ये जितने भी जोन्स हैं डाटा सेंटर्स हैं, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है ओवर रिडंडेंट कनेक्टिविटीज, दो दो लिंक्स कम से कम है किन्हीं भी 2 जोन्स के बीच में टू एस्टैब्लिश द कनेक्टिविटी। इनफैक्ट
क्लाउड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने आप में खुद रिडंडेंट है, right? When they are going to establish these data centers, so they are trying at the level best that they are going to establish redundancy almost at every level, right? चाहे वो डिवाइस लेवल है या डिस्क लेवल है, राइट? पावर सप्लाईज हैं, नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग स्विचेस हैं, राइट? जोन्स तो हैं, लिंक्स हैं, राइट? इन केस अब आप समझ सकते हैं कि रिडंडेंट लिंक्स का मतलब क्या हुआ, that if suppose two links are there, traffic can be load balanced, and if suppose any failure happens, so a backup link is always there, and so at no point of connectivity your network is going to be down. ऐसा कभी भी नहीं होगा, right? They are ensuring this is high availability. Moreover, so infra तो redundant है ही है, right? But on the top of that, you as a user, when you're going to maintain your data, for example, मान लीजिए अगर मैं स्टोरेज यूज करता हूँ, स्टोरेज, अब स्टोरेज में एक फीचर है Amazon Cloud के अंदर, and whenever you are going to make an upload to store the data, so your data is going to be again stored redundantly, meaning at least 3 copies are getting created here and there onto different devices and facilities and zones, but within the region, right? तो मान लीजिए अपना आपने स्टोरेज अकाउंट में अपना डाटा अपलोड किया, so one of the copy is going to be here, suppose in this zone, another copy is going to be there into this zone, in this zone, and like this. For you, it may be a single copy, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, but at the back end, it's all going to be stored redundantly. And now when customers are going to access the data, suppose, right? And if suppose it so happens that this is going to be very congested, right? So क्या होगा, कंजेशन का मतलब ट्रैफिक लोड ज्यादा हो गया है, अवेलेबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, so it is going to be diverted to other locations automatically. This is one thing, right? Ensuring high availability. See, if you have redundancy, right, redundant storage, obviously availability increases, right? अगर आपका डाटा का एक ही कॉपी है और सारा का सारा ट्रैफिक एक ही कॉपी पर आता है, obviously it's not going to be that highly available, right, as compared to if it is distributed one, right? And second thing is disaster recovery. And in case if any failure happens, तो आईटी की दुनिया में फेलियर होना स्वाभाविक, राइट? कुछ भी फेल हो सकता है, पावर फेल हो सकता है, नेटवर्क फेल हो सकता है, स्विच डाउन हो गया है, डिवाइस फेल हो गया, डिस्क फेल हो गया, राइट? नॉट ओनली दैट, ये तो बहुत छोटी मोटी बात है, इवन इफ सपोज एंटायर जोन गोज डाउन, एंटायर डाटा सेंटर भी अगर कोलैप्स होता है, व्हाटसोएवर इज द रीजन, फायर, फ्लड, सुनामी, राइट, कुछ भी अगर ऐसा होता है और ये पूरा का पूरा जोन भी अगर डाउन होता है, इवन देन for you as a customer, your data is still available and accessible, right? It is still there. That is what they provide the SLA. SLA का मतलब होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, राइट? वो एग्रीमेंट में ही बोलते हैं that resources are going to be highly available, durable, right? In case of any disaster, even then resources are still available to you. ऐसा नहीं होगा कि it's just like suppose you are depositing your money in the bank, राइट? आपके घर के नजदीक कोई बैंक ब्रांच है, आपने मनी डिपॉजिट कर दिया, तो कोई भरोसे भी किया ना आपने, तभी तो आपने वहां पर पैसा जमा किया ना, आपने अपनी ज्वेलरी रखी, आपने अपना कैश रखा, एक भरोसे पे रखा कि हाँ दिस इज ए रिलायबल सर्विस प्रोवाइडर, बैंक सर्विस रिलायबल है इसकी, राइट? अब मान लीजिए कल को हाइपोथेटिकली, राइट, वो बैंक ब्रांच में टाका पड़ गया, राइट, वहां पर पूरा बैंक ब्रांच ही कोलैप्स कर दिया, लुट गई ब्रांच, राइट, और आपका खाता इसी ब्रांच में था, क्या ये बैंक वाला ऐसा आपको बोल सकता कि नहीं नहीं भाई हम तो लुट गए यहाँ पर, ठीक है, और नाउ वी डोंट हैव योर मनी, इट्स ऑल गॉन, बोल सकता है आपको? बिल्कुल भी No, नहीं, sir. राइट? ये मतलब ही नहीं है वो, इट्स वो आप बोलोगे इट्स योर हेडेक, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, आई हैव डिपॉजिट द मनी एंड यू हैव टू पे इट बैक, फिनिश, इजंट इट? बस यहाँ पर जैसे मैं मनी बोल रहा हूँ, यहाँ पर है डाटा, और डाटा इज एज क्रूशियल एज मनी, राइट? कंपनी का डाटा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल क्रूशियल डाटा है उसका, राइट? तो यहाँ पर अगर तो उनका इंतजाम जो है कुछ इस तरीके से है कि अगर पूरा जोन भी कोलैप्स होता है तब भी आपका डाटा अवेलेबल है. दिस इज redundant infrastructure, and on the top of that, when you are going to avail the services and when you're going to store the data, so it is again going to be stored redundantly, right?
And if any failure happens, so data can be reconstructed from the alternate copies what they have into another zones. That is disaster recovery, right? So that's the reason that people are opting for this cloud, जो हम कभी भी घर पे नहीं कर सकते हैं, अपने सेटअप में ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी इतना पावरफुल इंफ्रा स्टैब्लिश नहीं कर सकते, और करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी डैम कॉस्टली, राइट? So one of the reason why we are opting for the cloud is that we are getting the best possible services in all the aspects with reduced rates, right, and better management, which perhaps you cannot have, or if you can have it, तो कंपनीज के प्राइवेट क्लाउड भी हैं, ऐसी बात नहीं है, विच द कंपनीज विच आर रिच एनफ एंड दे से नो 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 वी डोंट नीड योर सर्विसेज, हम खुद अपना क्लाउड बना सकते हैं, राइट? बनाने वाले बना भी रहे, राइट? फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट एप्पल, उसका अपना खुद का क्लाउड है, और एप्पल उनका अपना खुद का क्लाउड है, लेकिन अभी जो हम क्लाउड बात कर रहे हैं दैट इज पब्लिक क्लाउड, मीनिंग दिस इज समथिंग शेयर्ड, सर्विसेज आर ऑफर्ड टू द पब्लिक, राइट? दैट्स ऑलराइट, इस पर हम और बात करेंगे. Then next thing is that if you want to avail all these services in the cloud, so first and foremost thing is that you have to, हाँ बोलिए. सर जो 3 zones है, do they behave same? Maybe, may not be. Maybe, may not be. Right? Same means it's not visible to you as a customer. Yes sir. आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, लिटरली उस बैंक ने उस पैसे को उठा के फिजिकली कहाँ रखा ये आपको नहीं पता, और ना आपको जरूरत है हकीकत में, राइट? आपने जमा यहाँ पे किया था, लेकिन उसने उठा के कहीं और उसको तहखाने में रख दिया, ये उसका हेडेक है, यस राइट? सर. हाँ, तो उसी तरीके से आपको नहीं पता चलेगा एकदम से कि डाटा कहाँ पर है, किस जोन. मैंने आपको बताया कि 3 कॉपीज हैं, ये 3 कॉपीज प्रोवाइडर के लिए हैं, आपके लिए नहीं है. आपके लिए एक ही कॉपी है. अगर आपने बोला कि नहीं नहीं डाटा डिलीट कर दो, तो ये तीनों जगह से डिलीट हो जाएगा एक बार में, या आपने कुछ मॉडिफाई किया है इसके अंदर, तो तीनों कॉपीज मॉडिफाई हो रही है, आप 3 बार मॉडिफाई नहीं करने वाले. यस, इज दिस क्लियर? तो Yes. क्लाउड का अपना खुद का एक इंफ्रा है, उसका अपना खुद का प्लानिंग है, क्योंकि वो अकाउंटेबल है ना, उसने आपका डाटा लिया हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब उसको किस तरीके से मैनेज करे कि कल को उसको ये ना कहना पड़े कि नहीं नहीं यहाँ पर तो सुनामी आ गया था और आपका डाटा लॉस हो गया. ये कोई कस्टमर सुनने वाला नहीं है, और ऐसा अगर हुआ तो रिलायबिलिटी जीरो, कोई आएगा भी नहीं उसके पास, राइट? और दे आर Yes sir. गिविंग यू. तो बात ये है कि ये जो जितने भी डाटा है ये आपके लिए 3 नहीं है, वो प्रोवाइडर के लिए है. For you uploaded the copy, it's a single copy, right? ये स्टोरेज का अकाउंट, Okay sir. स्टोरेज का मैं बता रहा हूँ, ऐसा हर सर्विस में नहीं है, राइट? बट फॉर स्टोरेज इट इज लाइक दिस. कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें जरूरी है, खासतौर पर स्टोरेज की जो सर्विसेज है वो इसी तरीके से, राइट? तो उसमें जरूरी है. Yes. और आप अपना खुद का इंफ्रा बनाते हो, खुद के वीएम्स बनाते हो, उसमें उसमें आपको करना पड़ सकता है खुद का. सो इट्स ए शेयर्ड मॉडल. कुछ चीजें हम करते हैं, कुछ चीजें प्रोवाइडर करते हैं, ठीक है? सो फॉर यू एक्चुअली, राइट, फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू इट मे सीम टू बी आइडेंटिकल, क्योंकि इंटरनल ऑपरेशंस आपको दिखाई नहीं दे रहे, राइट? आपके पास जब हम बोलते हैं कि ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा आपको जब आप लॉग इन करते हो आपको थोड़ी दिखाई देता, आपको तो बस ये पता है कि क्लाउड है, इससे ज्यादा इंसाइट आपके पास नहीं है, राइट? आपको ये पता है कि मैंने बैंक में पैसा जमा कर दिया, वो बैंक वाले कहाँ लेके गए, कहाँ रखा, उसको फिजिकली कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये आपको नहीं पता. आपके तो बस अकाउंट में दिखाई दे रहा है वर्चुअली, व्हेन यू लॉग इन इनटू योर अकाउंट तो दिखाई दे रहा है कि हाँ दिस इज द बैलेंस व्हाट आई हैव, फिनिश. लिटरली वो पैसा कहाँ है इससे आपको ना पता, ना आपको कोई जरूरत है. आप दुनिया में कहीं भी घूम रहे हैं, किसी भी ब्रांच में जाइए, आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट टू यू, जस्ट लाइक दैट. यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है? चलिए, और कुछ अदर क्वेश्चन? No sir. हाँ सर. नेक्स्ट इज टू यूज दीज रिसोर्सेज. क्लाउड के अंदर जो भी रिसोर्स डिप्लॉयमेंट है, क्लाउड का जो भी इंफ्रा है, वो अगर हमें यूज करना है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू क्रिएट AWS अकाउंट. आपको अकाउंट क्रिएट करना है, ये बात शायद मैंने आपको पहले भी बताई थी, राइट? दिस अकाउंट एक्ट्स एज ए विंडो टू द क्लाउड. क्लाउड के अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं ये आपको अकाउंट के जरिए ही पता चलती है, राइट? नहीं तो बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा.
Two types of accounts are there. Just a moment. Two types of accounts are there. One is the business account. That is obvious. नाम से ही समझ में आता है that this account is only for business purposes. So companies, organizations are going to use it, create it, right, for their own commercial purposes. And other type of account is free tier account. This is the free tier account. This free tier account, in fact, this is meant not for business purposes. It's only for, you can assume like this, learning purposes, testing, doing R&Ds, right? उन बातों के लिए, especially learning, testing, ऐसा आप मान के चलिए. So this free tier account is valid for 12 months. 12 महीनों के लिए वो आपको ये अकाउंट देता है. Right? Free tier का मतलब है that most of the resources, not all of course, but most of the services and resources are available to you free of cost, right? But within limits, nothing is unlimited, right? For example, if suppose you create a virtual machine in the cloud, so Providence says that you can run this VM for 750 hours, free of cost, per month. So 750 घंटे जो है उसने आपको फ्रीली दिए, राइट? इसमें अगर आप इसको एक्सीड करेंगे, 1 घंटा भी ऊपर गया तो 1 घंटे के चार्जेस बिलिंग आने वाला है, राइट? सिमिलरली द स्टोरेज, राइट? द स्टोरेज साइज फॉर दिस वीएम जो डिस्क है 30 GB, राइट? दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट पर मंथ. If you exceed this quota, that's going to be chargeable. So like this, limit is there, right? हर चीज पर लिमिट है, हर चीज का एक कोटा उन्होंने डिफाइन किया है. आईपी एड्रेसेस कितने यूज कर सकते हैं, सीपीयू, रैम, स्टोरेज, ये सब का एक लिमिट है, राइट? लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी भी हैं जो एकदम से फ्रीली अवेलेबल नहीं है, स्पेशली दोज प्रोडक्ट्स विच आर लाइसेंस प्रोडक्ट्स, राइट? फॉर एग्जांपल, if suppose you create an SQL server, or if suppose you are using Oracle server, तो ये लाइसेंस प्रोडक्ट है मार्केट में, राइट? इनका कीमत है, सो दे आर नॉट फ्रीली अवेलेबल, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसी सर्विसेज जिसमें दूसरों का लिंक है, इंटरनेट से लिंक है, जैसे अगर आप डीएनएस सर्विस यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं रूट 53, दैट इज चार्जेबल, राइट? लेकिन अच्छा फीचर है, right? And this is what we are going to use. We are going to create the free tier account for our learning purposes here, right? So थोड़ा बहुत बिलिंग आ भी सकता है, बट मेरी राय में बहुत अच्छा एक फीचर उन्होंने दिया हुआ है, so that you can explore the cloud, you can learn the things, you can do R&D जो भी आपको करना है, right? बोलिए. सर वो वर्चुअल मशीन 750 आवर्स पर मंथ है, तो बेसिकली ये तो दिन में 25 आवर्स का दे रहा है, तो ये ऑलमोस्ट फ्री ही हुआ पूरा. दिन में 24 घंटे हो रहे हैं, ठीक है? यस सर. होल्ड करना. हाँ, यस, बोलिए. तो आप जो बोल रहे हैं, हाँ, तो वो सही है. एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है? आप एक मशीन को लगातार अगर चलाएंगे
24 आवर्स, आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 750 आवर्स के अंदर ही आपको अभी 24, अगर एक महीने तक आप इसको चलाते हैं तो 24 इंटू 30, 30 दिन का महीना अगर हम मान के चले तो इतना हो जाएगा। कितने हो जाएगा ये नंबर ऑफ आवर्स? 0 3 12 3 3 6 750 से कम 720 हो जाएंगे, 9 और 31। तो मतलब एक तरीके से आप मान के चलिए कि एक वीएम लगातार आप एक महीने तक चला सकते हैं। एक वीएम लगातार एक महीने तक आप चला सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। लेकिन आपने अगर 2 वीएम बना दिए, 2 वीएम, तो वो 15 दिन तक ही आप चला सकते हैं, ये मतलब हो गया। ओके सर। समझ में आया? आपने 4 वीएम बना दिए तो एक हफ्ते ही चलेगा। ओके सर। ऐसा है कैलकुलेशन, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ आवर्स में मैंने इसको काउंटिंग किया है, ऐसा हर सर्विस के साथ है। यस, और बोलिए। Nothing, sir. ठीक है, चलिए, बोलने को तो बहुत कुछ है इसमें। अभी मैं इधर ही रखता हूँ, टाइम हो गया, दूसरे बैच का टाइम है, नहीं तो मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, लेकिन आई हैव अनदर बैच, आई एम गोइंग टू स्टॉप इट हियर। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी मैं दूसरा पार्ट शुरू करूंगा तो फिर आई नीड कंटिन्यूटी। तो आज का हमारा सेशन थोड़ा सा अधूरा रह गया है, उस हिसाब से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, बट विल कंटिन्यू दिस सेशन ऑन मंडे। ऑलराइट, मंडे Yes, sir. Sure, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. All right.